15 years, and then they need to go for renewal, which is valid for another 5 years. To initiate this process, the government is setting up automated testing station for vehicles, and I'll come to that in a while. But the first phase of this, from 1st April 2023, fitness testing of heavy commercial vehicles will start. And post that, for all other classes of commercial vehicles and for passenger vehicles, we will start automated testing from 1st June 2024. In case a vehicle fails the automated fitness test, there's a possibility to reapply for another retest. And after that, the vehicle will be declared end of life. As I said, that the focus has been to make it inclusive, to create a pull for everyone here. So there was a lot of thinking done by the government to see how we can incentivize and encourage vehicle owners to participate in this policy. And hence the first thing was to say that as soon as a vehicle owner submits the vehicle to a registered vehicle scrapping facility, they get what's called as a tradable certificate of deposit. And that links them to all possibilities of incentives and benefits. The kind of benefits that are being proposed are right from waiver of registration fees to concession on road tax of up to 25% for non-transport vehicles and up to 15% on transport vehicles, and also the discounts from auto OEMs for the new vehicle that needs to be bought. What we are also supporting the vehicle owners is that the complete responsibility of deregistration of the old vehicle will lie with RVSF, and ELVs registered in any state can go to any registered vehicle scrapping facility in the country to these centers and get their vehicles scrapped. The last piece is to make sure that we are very focused on this. There is a proposal that has been made to increase the fees for registration, fitness test, and issuance of fitness certificates to make sure that the focus is on removing these risky, polluting vehicles from the roads and bringing in more advanced vehicles. Is this a policy, or have we gone into a very focused implementation phase? The answer is we are very deep into implementation. A lot of major notifications have already been circulated, guidance sought from all the stakeholders across the country. For example, the registration and functions of vehicle scrapping facility rules 2021, as well as the rules for recognition, regulation, and control of automated testing centers, the two backbones of this policy, they have already been notified and they will be effective from 25th September 2021. They have been effective. Likewise, the revision of registration, fitness certificate, and fitness testing fees, as well as the concession in motor vehicle tax for vehicles bought against certificate of deposit will get action from 1st April 2022. As a symbolic gesture to say that government really believes in this policy and wants to take the first step ahead of everyone, the mandatory scrapping of government vehicles older than 15 years is going to be effective from 1st October 2022, where government will take the lead in taking this initiative. The two opportunities in this policy for investments come from two types of projects. One is what I have been speaking about, it's called as the registered vehicle scrapping facility, and the automated testing station. As one can imagine that we are talking about very large number of vehicles that could be possibly scrapped. We are talking about over 1 crore. Equally important would be to create a network of these RVSFs and ATS across Indian cities, and that's where the investment opportunity will come from. Maharashtra alone will have more than 6 lakh, around 5.8 lakh vehicles, which will be reaching the end of life, and hence we will need these centers. What has been done in the policy is to make sure that these registered vehicle scrapping facilities are state-of-the-art and are aligned to all aspects of regulations, technology, as well as value creation. Just to give you a specific on them, each of these centers would be environmentally friendly and will be aligned with the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board norms. They will be technologically integrated with the key databases of Vahan,
with NCRB and police database to make sure that the vehicle is deregistered and the vehicle owner doesn't have any hassle related to that. As we spoke about, when we were working on this policy, we saw that around the world, globally, the scientific disposal of vehicles and the scrapping process creates a lot of value, and around 90 to 95% of the recovery happens in these countries, and in our country it was right now around 75%. So this process will also lead to generation of a lot of key mineral resources, a lot of metal resources, a lot of resources for allied industries, and that's what will also get generated through this. And as these resources get generated, what has been done to integrate the informal kabadiwalas in this policy, they will be supporting the collection centers for these ELVs and a virtual platform enabled by MSTC where these materials can be recycled have been brought on board so that the auction of scrap as well as the sourcing of ELV can be made possible. We are imagining that over 50 to 70 RVSFs would be set up across the country over the next 5 years, and that's the investment opportunity we are talking about. From an investor perspective, while this was the citizen perspective, from an investor perspective, what's great to remember is that all RVSF applications for investors will be processed through Central Single Window Clearance Portal. States and union territories will clear the RVSF applications within 60 days, else they will be, their approval will be deemed approved. The RVSF established in the states and union territories can accept and scrap vehicles registered across the country, and they will also be facilitating the vehicle deregistration process electronically via the Vahan database. This is already happening, and the state of Gujarat is already on board on this single window portal. So as we all know that DPIIT set up India's national single window for investment approvals, and we have already brought the vehicle scrapping policy on board with the national single window. And single window system for registration of RVSFs and ATS are already live for the state of Gujarat. There were 7 MOUs that were signed, and it's already happening quite actively over there. Secretary Sir spoke about the investment opportunity and the business model. I'll just take a few minutes. We are all running short of time, but just to give you a sense, there could be 2 types of facilities you could think about. There could be annual capacity of 25,000 vehicles, which means almost 2,000 vehicles on a monthly basis. And these centers would need on an average capex of 14 to 16 crores. This would primarily come from the machinery that's needed, shredding equipments, the building infrastructure you will put in, and a bit of technology infrastructure that would be needed beyond the set of people you will employ on that. And with the current revenue model that we are proposing based on the scrapping value auto scrapping center generates and the volume that is quite possible, we are expecting a project return of around 15% very easily. And the higher the number of vehicles goes for a center, these returns could be much stronger. Likewise, for the automated testing stations, they will be state of art. They will improve the transparency in the fitness testing process. So they will have all the recordings of the visual checks. They will be set up on PPP modes, and they will be linked to RTOs, and an online portal will be put up for this. Again, the overall capex for 2-lane centers would be around 6 to 7 crores and around 13 to 14 crores for 4-lane ATS. And we are expecting a large number of them to be set up. Specifically for Maharashtra, and that's my last slide on this topic, we're expecting at least a business opportunity of 5 to 7 RVSFs and around 30-35 automated testing centers in the state, which will generate a large employment opportunity. I look forward to answering some of your questions parallelly after the session, and thank you for your listening. Thanks a lot. Thank you.
Thank you very much for the detailed presentation. And taking this ahead, what we will do is we will basically take you through a couple of films that have been submitted by two organizations who are basically involved in these scrapping facilities, which is set up as a joint venture between Mahindra SLO and MSTC. Here we go. Known as one of the fastest growing economies in the world, India has shown tremendous growth. Consequently, it has also emerged as the fourth largest automobile market in the world. But progress is a double-edged sword if not treaded carefully. Because of an astonishing pace, old vehicles are also entering their end-of-life stage, proving to be not just a safety issue, but also affecting the environment as a result. With no organized way of retiring such vehicles from the roads, it has become a major concern. Presenting Cero, India's first organized automobile recycling company, conceived by India's two most trusted public and private companies, and support of Ministry of Road, Transport and Highways. Under the guidance of Ministry of Steel, Cero stands for zero tolerance to unsafe and illegal practices in recycling of end-of-life vehicles. With its unique design, Cero shall contribute not only towards conserving natural resources in India, but also saving a significant amount of foreign exchange by reducing the import of steel scrap. Cero's automotive recycling initiative is a pan-India network. Cero's vehicle collection and dismantling centers are equipped with state-of-the-art recycling equipment at par with global standards. Besides cars, Cero also has a specialized process for recycling of commercial vehicles such as trucks and buses. Inspired by Digital India, the entire process is paperless to simplify and enhance the customer experience. At Cero, our aim is to reuse steel beneficially, reduce emission levels, save natural resources, and create employment. As India plans to implement environmentally sustainable ideas, Mahindra MSTC hopes to make the one countable effort that takes us into a safe and secure, greener future. Cero, towards a zero pollution nation. So that was one of the examples of the scrapping facility that we had for you. Moving ahead, let's bring up a film by Maruti Suzuki Toyotsu India Limited, giving an overview of their vehicle facility, the vehicle scrapping facility in Noida. नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है. Aligning with the visionary National Automobile Scrappage Policy, Maruti Suzuki Toyotsu India Private Limited (MSTI) was set up between Maruti Suzuki and Toyota Tsusho Group. The first MSTI was inaugurated by Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, in November 2021 at Noida. MSTI follows globally approved quality and environment standards. These include complete solid and liquid waste management, ensuring zero discharge of liquids and gases from the ELVs. Built with an investment of over INR 44 crores, the facility uses modern and technologically advanced machines to dismantle and scrap ELVs in a scientific manner. The ELVs procured from dealerships or individuals are first checked through a scanner for any radioactive residues. Thereafter, documents, physical verification, battery status and oil leakage conditions are also checked. Tires and CNG gas are systematically removed. The ELV is then taken to Station 2, where the battery is removed. The AC gas, the spare tire are also removed here. Here the exhaust pipe, engine oil, transmission oil, coolant, brake oil, steering oil and windshield liquid are removed from the vehicle and zero spillage is ensured. Station 4 is for removal of all body panels like doors, bonnet, fenders. The bumpers, headlights and tail lights are carefully removed.
The ELV then proceeds to Station 5. These include dashboard, floor mat and roof lining. The wiring harness and small interior parts are removed. Here the heavy components like the engine, front and rear suspension, radiator, brake lining and engine room wiring harnesses are systematically removed from the ELV. At the next station, the glasses, trims and plastic fasteners are removed. The VIN number and chassis number are cut out from the shell of the ELV. The body shell is ready to be compressed at the bale press. The components and parts removed from the ELV are further dismantled at offline stations. These include engine, catalytic converter, suspension, steering, air conditioner, instrument panel, airbags, etc. All these items are then sold to the government-authorized scrappers and recyclers. This completes the teardown of the ELV. The entire process of dismantling of the ELV is completed in around 200 minutes. I am really happy that you are using 95% of the material, recycling the material. 100% machinery is from the Indian manufacturer. That is really a great thing as far as our mission of Ahmednagar, Bharat. Committed to the vision of clean air and safe roads, the MSTI facility at Noida is just the beginning. The company will set up similar state-of-the-art facilities in following years. Fantastic. So, Mohammad Athar gave us the key features of the vehicle scrapping policy. The videos gave us an overview and insight on the facility itself. And now it's time that I would like to invite Shri Ashish Kumar Singh, Additional Chief Secretary to the Honorable Chief Minister Government of Maharashtra, and also the Additional Chief Secretary Transport and Port, to give us the state roadmap for the implementation of the vehicle scrapping policy. Ashish ji, swagat. You can come. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin ji Gadkari Sahab, my close friend and colleague, Secretary Ministry of Road Transport and Highways, Shri Girdhar Armane, former Secretary Civil Aviation Government of India, Shri Pradeep Korola, sir, also an old friend of mine, Chairperson of NHAI, Srimati Alka Upadhyay, Chairman State Bank of India, Shri Deepak Khara, my colleague from the Government of Maharashtra, Additional Chief Secretary Industries, Shri Baldev Singh, other dignitaries on the dais, representatives of OEMs, dealers, transporters, banks, insurance companies, and startups, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. By the time I finish, it'll be afternoon. I'm sure you guys are very tired by now. However, on behalf of the Government of Maharashtra, it is my pleasure to welcome all the stakeholders to this National Summit organized by the Ministry of Road Transport and Highways. At the outset, I would like to congratulate the Ministry of Road Transport and Highways for announcing the first ever scrappage policy of vehicles that aims to achieve critical objectives like phasing away unfit and polluting vehicles. Mobility today is on the cusp of a major revolution, and we are all seeing that transformation all around us. The future is definitely going to be electric, shared, connected, and even though we may not like it, most probably autonomous. Post the COP26 in Glasgow, Norway has already announced that all its vehicles which will be registered from 2025 will be electric. And UK has announced that from 2030 onwards, all vehicles which will be registered in UK will be electric. India itself has committed to net zero by 2070. And this will only be possible if all the ICEs are replaced with electric vehicles. And those replaced ICEs, the parts or maybe the whole of them would require to be scrapped, would require to be recycled, failing which will perhaps lead to a higher pollution than what we would have envisaged otherwise. Of course, this will also require ramping up of our renewable power generation infrastructure, but that is for some other department to talk about. Doing a sales spiel of Maharashtra, I would like to just say that we are the state with the highest gross state domestic product in the country. We are also the state with the largest amount of exports and the foreign direct investment being attracted into India. We have a huge geographic advantage, and that has led to evolution of a very large transport network of more than 300,000 kilometers of road network.
and most of it was contributed significantly by our Honorable Minister when he was earlier the Minister for Public Works Department in the government of Maharashtra. We have 5 international and 13 domestic airports, 2 major ports, and 53 so-called minor ports. Some of them are actually handling more cargo than the major ports in the state. We have also attracted multiple investments in multiple sectors like telecom, power, education, industry, and automobiles. The state has the highest vehicle sales in the country and the highest share of automobile exports in the country, which is what makes it not only the manufacturing hub, but we are hoping that it will also become the hub for all scrapping from across the country. Not that we want all the polluted stuff to come here, but yet, since we are the largest registers of vehicles as of today, we will perhaps need large scrapping facility in the state to deal with the challenges that will come about due to the transformation in mobility itself. We have also recently announced a new electric vehicle policy, which has been received very well by all the OEMs as well as the customers, wherein we have announced significant incentives on both the demand side as well as the supply side. In fact, in the process of making the new scrapping policy for the state in alignment with the central government, we are hoping that some of these incentives could be extended to people who invest in scrapping facilities in the state as well. Of the 5 major auto clusters in Pune, Aurangabad, Nashik, Pimpri, Chinchwad, etc. that we have in the state, there is tremendous opportunity for people to invest in the scrapping facility in the state, because the ecosystem is already existing, and therefore a lot of it can be recycled and reused within the same geographical area. Our draft voluntary scrapping policy is also in the making, and there we intend to actually announce certain tax incentives for those who have not paid taxes a few years, because some of these old vehicles tend to not get scrapped because of the fact that they have huge tax balances, and people who intend to scrap them find it rather expensive to pay those outstanding taxes and then go in for scrappage. We hope that with the new policy that the government of India has announced and the new policy that is on the anvil as far as the state is concerned, we will be able to attract the vehicle owners to voluntarily come forward and scrap their vehicles. We would like the scrapping investors to actively involve all the owners to scrap their vehicles and convert them into EVs, because it would be of great significance both to the manufacturers as well as to those who scrap, since we have announced very significant benefits for purchase of new EVs in the state. There is no road tax till 2025. There is, of course, no registration charges and no other permit charges that go with EV registration in the state of Maharashtra. We also hope that in the new policy that we intend to announce, the EV manufacturers which are getting attracted into the state would be also simultaneously attracted to set up these scrapping facilities, because it is a direct benefit that would flow to all those manufacturers in case these vehicles get scrapped and get replaced, because we have also announced in our electric vehicle policy scrappage incentives to all those who voluntarily scrap their ICE vehicles. We estimate that the market size for investors in Maharashtra would be very large, because more than 5.8 lakh vehicles are already more than 15 years of age, and more than 7.5 lakhs vehicles are more than 20 years of age today. And that's a substantial number for people to invest in Maharashtra and take the benefits that both the government of India as well as the tax benefits that we are offering within the state of Maharashtra. Without the industry's participation, it would not be possible for us to achieve this vision, and the government of Maharashtra is committed to provide all the necessary support to each and every one of the investors which intends to invest in India for this new scrapping industry to be established in the state. We look forward to interacting with one and all of you to understand your perspective and suggestions, to be able to successfully craft and implement the scrapping policy in alignment with what the government of India has already announced. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Thank you very much, Anek Dhanyavad, sir. And now we move ahead for another very important talk, and that is on the potential investment opportunities under the vehicle scrapping policy. And I would like to invite Shri Sushant Naik, the CII representative, as well as the Global Head, Government and Public Affairs, Tata Motors, to come forward. Shri Sushant Naik. Honorable Minister, Road Transport and Highways, Shri Gadkari ji, distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen. Sir, Gadkari ji, first and foremost, on behalf of CII Maharashtra, we would like to once again express our deepest gratitude and give our compliments to the government for not only announcing the long-awaited scrappage policy, but also setting up in motion allied aspects that complement vehicle scrappage through its notification on the registered vehicle scrappage facility and automated testing station in the form of crucial policy intervention. The vehicle scrappage policy has been in the works for some times, and CII on multiple occasions has been advocating the policy through various representations and suggestions made to the government. The policy is an important link to achieve the circular economy of waste to wealth, and CII welcome the same. Honorable Prime Minister of India has set the goal of achieving 3 C's: free, clean, congestion, and convenient mobility through the vehicle scrappage policy, which would also contribute towards achieving India's COP26 commitment and attaining net zero by 2070. India is the 4th largest auto market in the world, and it is responsibility to address the challenge of effective handling of end-of-life vehicles, which can be a source of soil, water pollution if not managed in a scientific and environment-friendly manner. The industry is integral not only to the economic development of the country, but also to the social development of the nation. We believe as CII, the scrappage policy is a panacea that will act as a catalyst in generating employment in the auto ancillary scrappage space and make sector more organized. We as industry see this policy as immense opportunity in times to come, which will create value for all the stakeholders. It will also energize India's auto sector and metal sector under the principle of reuse, recycle, and recover. I quote someone else's statement: today is our opportunity to build the tomorrow we want. It is very heartening to see as a CII that government is working in tandem with all the key stakeholders to make the ecosystem conducive for cleaner and greener mobility and innovation through policy interventions. This partnership for unlocking their potential, be it the employment generation, pollution reduction, or accelerated demand for electric vehicles. The metal recycling business in the country are expected to be tremendously benefit this waste to wealth creation opportunity and bring down imports, thus contributing to our Prime Minister's mission and vision of Atmanirbhar Bharat. The scrappage industry would be a local industry which will require to set up every 200 to 300 kilometers because of high inbound logistic cost and availability of demand clusters where one could sell the end-of-life vehicles. Therefore, it provides immense opportunity to local entrepreneurs to enter into this area. There are some global examples we would like to quote. Globally, there are precedents in EU, Japan, and South Korea that post-implementation of such a policy, markets got organized and were able to recycle up to 90 to 95% of the vehicle. There are companies in UK, France, which are clocking 40 to 50 million US dollar of revenue by this business. However, they took some years to reach this maturity post-policy implementation. Further, there is a good opportunity to export reuse parts in Southeast Asia, Asian and Africa area. In future, such setups can work closely with OEMs for recycling as well as
fulfilling their compliance requirement at value. We feel there are key imperatives to make this policy a success are consistent supply of ELVs we call, end-of-life vehicles, establish demand linkages to sell scrap, plastics, rubbers, e-waste and reuse parts, strong IT system to source end-of-life vehicles, sell aftermarket parts and manage operations. Sir, your ministry has been guiding light for us in the past and will continue to be in the times to come so that continued sustenance of the industry is ensured and cleaner mobility continues to reach far and wide. With this, I would like to leave you one thought: reuse the past, recycle the present, and save the future. It's time to go full throttle. Let's accelerate the automobile recycling industry in India and promote Atmanirbhar Bharat. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Thank you very much, Shri Sushant Naik. And of course, we spoke about the key features of the policy. We spoke about the roadmap and the implementation. Now it's also time that we take some investor feedback. And to begin with, I'd like to invite the chairperson of the State Bank of India, Shri Dinesh Kumar Khara, to tell us more about the investor feedback and remarks about this particular policy. Very good afternoon to all of you. Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Gadkari ji. Secretary Ministry of Road and Highways, Mr. Amane. The Chairperson of NHAI, Ms. Alka Upadhyay. Other dignitaries on the dais and the guests. I think it's quite a privilege to be present here today when we are deliberating on two very critical issues relating to one which is very critical for the development of this country, and the second for becoming green, the scrappage policy. These are the initiatives which will take this country a long way. As far as highways are concerned, they have been very critical for improving their access to the market. The vision for the Atmanirbhar Bharat is not just about what to produce and how to produce, but also it entails delivering our produce efficiently to the market. Investment in infrastructure actually leads to creation of direct and indirect jobs. And to that extent, the multiplier effect which emanates from this highway development is immense. The road network actually offers support to transportation to about 65% of the country's freight and 90% of the India's total passenger traffic. Road transport has emerged as one of the dominant segment, which is contributing almost 5% of the India's GDP. The pace of construction has increased multifold from 18 km per day to 30 km per day, and now aiming at 40 km per day in the year financial year 22. It will give a significant impetus to the opportunities and the development of the regions. In last over 7 years, national highway network in the country has expanded from about 91,000 kilometers to more than 140,000 kilometers, demonstrating a CAGR of more than 6%. Road highways of almost about 35,000 kilometers are planned to be developed under the Bharatmala Pariyojana Phase 1 with an outlay of more than 5 trillion Indian rupees. This has been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. As part of Phase 1, 22 greenfield corridors are being developed with a length of almost about 8,400 crore at a capital cost of 3.6 trillion Indian rupees. Honorable Prime Minister has also launched the PM Gati Shakti program, which actually talks about initiatives like multimodal logistic parks. I'm sure it will go a long way in terms of the growth of this country.
The National Infrastructure Pipeline, which envisages infrastructure investment of 111 trillion over a 5-year period, includes the road sector investment of 20 trillion. This is a significant step with annual average investment of 22,000 crores. We at SBI, we are a trusted partner in the growth of roadway sector in the country. We are a very strong proponent of this being one of the major growth lever for the economic growth of this country. We have granted credit worth 35,000 crore as of June 21 to support the authority for execution of multiple road infrastructure projects. Further, we also granted credit worth about 5,000 crore to the SPV for Delhi-Mumbai Expressway. We further supported this particular initiative, which is going to be a major growth initiative, by extending another credit of 8,000 crore very recently. We are the largest lender to the recently launched National Highway Infra Trust, contributing 50% of the overall borrowing to the InvIT. We support EPC contractors, HAM concessionaires, and we are a key lender with the total exposure of more than 90,000 crore in this particular sector. For all purposes, SBI exposure to road sector at 90,000 crore is almost 37% of the total banking exposure to this particular sector. As far as asset monetization of the national highways, generating toll revenues both through the primary and the secondary mediums are concerned, we believe that it's a very welcome step to attract private investment in the sector. The government's ambitious program to generate 6 trillion over a 4-year period under the National Monetization Plan includes indicative value of core assets of road sector of almost about 2 trillion, which constitute highest share of 27%. We at SBI have already started supporting investors in participating in the asset monetization initiative. Some of the leading investors, we have extended the credit facilities, and we would be more than happy to explore such initiatives. The preferred mode of monetization program would be through the BOTs and the InvITs, and we have already taken a head start by offering by subscribing to the NHAI InvIT to the extent of 1,000 crores. We have already expressed our interest to continue to be part of the monetization program through this innovative mechanism. We not only support from the bank, but our group companies, which also includes the pension fund, which also includes our long-term, we have got the long-term liabilities from the insurance company. So all of them are part of this particular initiative. And we feel that this actually holds a huge potential for this economy to really grow. Happy to share that NHAI, and for that matter, the kind of irritants which we had experienced, that is a very, very responsive place. Whatever we have come with our suggestions and our cause of concerns, Honorable Minister has been very, very receptive, and he has offered very pragmatic solutions. And we feel that this is the way forward, and the kind of receptibility which we have experienced, it actually speaks a lot in terms of the commitment from the ministry for supporting this initiative. In the recent past, we have observed
that even the technical and the financial eligibility criteria have been relaxed to promote the domestic contractors and the concessionaires ecosystem. Unless and until a very vibrant ecosystem gets created, perhaps the development of any sector is almost next to impossible. Value of previous works required has been reduced to 100% of the total project cost as compared to 200% earlier. Similarly, the requirement of the turnover has been optimized to 15% of the total project cost as compared to 20% in the past. The wayside, I mean, a very pragmatic policy which so overall, if I conclude, I would like to say that we at SBI continues to believe in the role of the road and the highway sector in achieving the nation's vision of becoming a $5 trillion economy. We have already demonstrated our commitment to the development of this sector and aim to be the trusted partner in future initiatives too, supporting infrastructure by aiding both the government entities and the private ecosystem, which will further enhance the capability of this sector. Thank you very much. All the very best. Thank you. Thank you very much, Shri Dinesh Kumar Khara, Chairperson SBI. And continuing with the discussion regarding remarks and feedbacks, I'd like to now invite Senior Principal Infrastructure CPPIB, Srimati Kavita Saha, for some more inputs and remarks on the investor feedback and regarding the policies. Thank you. Honorable Minister, Mr. Gadkari ji, Secretary, Mr. Armani, Chairperson, Mrs. Upadhyay, eminent speakers and fellow guests at this eminent event. It's a privilege to address such an august gathering on behalf of CPP Investments, which is Canada's largest pension fund manager and one of the largest pension fund managers in the world, with AUM of over rupees 32 lakh crores. We have been a significant investor in India, and as of now, we have over 1 lakh crore, which is invested across various sectors in India, including infrastructure. And we are expecting it to grow significantly, both as CPP's own AUM grows and also our interest in investing in markets such as India. We have been active in the Indian road sector since 2014. And as of now, we think that we are one of the largest investors in the sector, with investments in over 28 road assets, over 7,000 crores invested across 3 platforms, the most recent of which is the NHAI InvIT. Much before the InvIT, we have also, along with one of our investee companies, L&T IDPL, pioneered the private listed InvIT concept in India way back in 2018. And since then, we have managed to grow it by more than 100%, also with the support from other marquee investors who hold more than 75% of IndInfraVIT, which is our roads InvIT. I would really like to commend the Government of India for the consultative approach that they have had throughout the conceptualization of the monetization program. And we, along with some of our peer investors, have had the privilege of working closely with various instrumentalities of the Government of India in conceptualizing the National Monetization Program. But what I must also commend is how quickly it was converted from a concept to action. This year in particular, where we have seen both the PGCIL and the NHAI InvITs being launched and successfully launched. We were in this process supportive in both of these InvITs, where we have participated in a significant way, anchoring the issues from concept to commissioning. And specifically with regard to the NHAI InvIT, we must commend the ministry in taking the right steps to set up the InvIT as an engine
which can deliver the ambitions of the government under the National Monetization Plan. As my colleagues have and other panelists have already pointed out, the road sector is the largest component not only of the national infrastructure pipeline, but also of the national monetization pipeline. So the ambitions in the road sector are the largest. I would also like to mention about the experience we had in investing and in the partnership that we have had both with NHAI, the ministry, as well as with like-minded investors, both international and domestic. I must also remark on the fact about how this is being created sustainably by bringing on board a professional management team which can drive the growth of the InvIT and drive the best standards of governance for the InvIT. And we think that this should set a very effective template for other monetizations that the government has on the anvil. And I would end with hoping that the government will look at investors such as ourselves, not only as sources of capital, but also as partners for the government in driving the thought process, bringing best practices, and bringing the best of governance to all of these institutions which are being set up. And lastly, we believe that this will help create lasting value, both for the investors as well as the government, because this will enhance the confidence of the investor community and help attract capital into those sectors which need private investments at scale. So, highways has very effectively set a roadmap, and we look forward to creating other such opportunities in other infrastructure sector. With that, thank you. Thank you very much. As one of the Newton's laws says, that every action has equal and opposite reaction, and that's what we have now. We commence the ceremony for signing of MOUs for investment in highways, transport, and logistics sectors. As Kavita ji mentioned, a very consultative and a proactive approach has now led to signing of these MOUs. And now I'd like to call upon, for the first signing of the MOU and the exchange of the documents, I'd like to invite the CEO of NHLML, Mr. Prakash Gaur, the CEO of MIDC, Mr. P. Anmangalan, and the ED Planning RVNL, Mr. Vikas Avasthi, to kindly come on the dais for the first exchange of the MOUs. A big round of applause for this, because this is the reaction that was expected. This MOU is for the development of multimodal logistic parks at 5 strategic locations in Maharashtra, the Mumbai metropolitan region, Pune, Nashik, Aurangabad, and Dighi Port Industrial Estate. MIDC will provide land for development of MMLPs, and NHLML will provide the external road connectivity to the site, and RVNL will provide the external rail connectivity to the site. The development of MMLPs will provide a boost to the economy of Maharashtra. Big round of applause once again. Thank you very much, gentlemen. And now I'd like to invite the Additional Chief Secretary, Industries and Commerce, Government of Maharashtra, Shri Baldev Singh ji, as well as Mr. Sushant Naik, Global Head, Government and Public Affairs, Tata Motors, to come on the dais for the signing of the MOU. Sir? Where is the round of applause? I know lunch is around the corner, but we got to celebrate this. This MOU is for the development of registered vehicle scrapping facility in Maharashtra. This facility will ensure that unfit and polluting vehicles in Maharashtra are scrapped in an environmentally friendly and sustainable manner. Mr. Baldev Singh and Mr. Sushant Naik. Zordar taaliyan ho jaye. Fantastic. Thank you, gentlemen. And many, many congratulations. Moving ahead, we have another MOU that will be exchanged and signed today. I'd like to invite the Managing Director of Mahindra Accelo and Cero, India's first organized vehicle recycler, Mr. Sumit Isar, to come on the dais. And currently, Cero is present in 11 cities, including Greater Noida, Chennai, Pune, Bangalore,
Mumbai, Ahmedabad, and looking to expand this in Maharashtra. Of course, I'd like to request Mr. Baldev Singh, the Additional Chief Secretary, Industries and Commerce, Government of Maharashtra, to come ahead for this round of applause, friends. Ladies and gentlemen, here we go. The applause has to continue, or else I need to give some instructions to the lunch counter. Is it? Yeah, there it is. Fantastic. Thank you, gentlemen. And moving ahead, I'd like to invite Deputy Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Mr. Gaurav Gupta, as well as Professor IIT Madras, Dr. Venkatesh Balasubramanian, and the CEO and Executive Director, Map My India, Mr. Rohan Verma, to please come on the dais. Sign the MOU to mark high-frequency accident and safe navigation zones under the vision of the Ministry of Road Transport and Highways to minimize accidents and deaths by road accidents. The three agencies have signed an MOU and jointly will be launching India's best and free-to-use navigation app service, which provides road safety alerts to users about upcoming accident hazards while driving. This app will offer a myriad of mapping, navigation, safety and hyper-local features, and it has already won the Government of India's Atmanirbhar App Innovation Challenge in 2020. Zordar taliyan ho jaye. And it has been enhanced with the help of the Ministry and IIT Madras to add in data collected about accident-prone zones and various road stretches. Thank you very much, gentlemen. And now, of course, it's time that we hear it from the man himself. But before we do that, we need to really understand what has been the journey of the person who we call the infrastructure man of India. Multifaceted, a visionary, leader, and multitasking, multi-talented. Before we request Nitin ji to come on the dais to address, we have a small film on the Honorable Union Minister. Request the audio-visual to be played. There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's Nitin Gadkari. Connecting over 13,000 unconnected villages with an all-weather $100 million USD project is another feat accomplished by this far-sighted visionary. Nagpur, his hometown, has seen first of its kind double-decker bridge, an innovative beautification of flyover using local artists and painting of great political and social leaders was added attraction. Ajni Intermodal Station will have connectivity between long-distance buses, city buses, railways, metro and indirect link with city airport. Nagpur Broad Gauge Metro, which is a commuter rail project planned for Nagpur city and extending up to adjacent areas of Wardha, Narkhed, Ramtek, Bhandara and Chhindwara.
World-class institutions like IIT, IIM and AIIMS emerge and thrive under his watchful gaze. This is in addition to the over 1,000 Ekal Vidyalayas that go a long way into molding the future tribal generations. Performing over 10,000 successful heart surgeries is another stupendous achievement in his illustrious career as a warm-hearted do-gooder. The city of Nagpur is the first city to explore alternative biofuels for transport. These include bio-CNG buses. His innovative idea of India's first of its kind CNG-run tractor has proved to be farmer-friendly, cost-effective and helping in reducing air pollution. In a historic push for biofuels, Gadkari ji is introducing flex engines which will run on 100% ethanol, directly providing additional income to farmers and the agricultural sector. Sanskritik Mahotsav, motivating local artists to go nationally. Krida Mahotsav, supporting local sportsmen to showcase their abilities and motivate them to go nationally and on Olympic level. Projects like AgroVision are helping farmers with latest technologies and practices. His idea of using sewage water for power generation, use of ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021. The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers. These world records are as follows: highway construction rate at 37 kilometers per hour, construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours, laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement. The figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 Greenfield Expressway, initiated by the bridge building messiah as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, 2 world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort. Logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment. The MSME Ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration UR offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award.
Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicles, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800 plus video conferences. His quick decision making in procuring oxygen (PPE) kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal. Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. For Shri Nitin Gadkari ji's special address by the Chair, Honorable Union Minister. मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम के लिए आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, इसलिए हृदय से मैं महाराष्ट्र सरकार को, सुभाष देसाई जी को और उसके साथ साथ सभी इन्वेस्टर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहाँ और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरू भाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो ये करके देखो, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए MSRDC की स्थापना हुई, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन था और संस्थापक था। और RC सिन्हा जो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम दोनों मिलकर होटल की बात को छोड़ो, छोटे छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर, लैपटॉप पर नया नया आया था, मेरी उम्र 36 साल की थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। वो दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे, आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं, इसका आज मुझे समाधान होता है। और जब पहली बार 500 करोड़ रुपए के लिए
हम उस समय की बात कर रहा हूँ 96 की। हम कैपिटल मार्केट में गए और पहली बार हमको 1160 करोड़ रुपए बॉन्ड्स में रिसीव हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए। दूसरे बार फिर हम लोग 650 करोड़ के लिए गए, फिर 1100 करोड़ रुपए मिले। तो रतन टाटा मुझे कहते थे कि तुम हमसे भी होशियार निकले, क्योंकि हमें किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यह पैसा पब्लिक मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगा। ये स्टोरी यहां समाप्त नहीं होती। जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, फ्लाईओवर्स बन गए, वर्ली बांद्रा बन गया, इसके पैसे वसूल हो गए। और जब ये बात आई थी, ये पहला बीओटी रोड देश में बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और पहली पॉलिसी बीओटी रोड की जब बनी तब मैं दिल्ली गया था, और उसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे मलबार हिल में एक टीवी शॉप ने दिया। मैं नया नया मंत्री बना और मेरे घर पर कलर टीवी लेना था। तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था रॉकी हिल में, वहाँ सब जजेस रहते थे और मैं अकेला मिनिस्टर था, और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। तो मुझे फ्रीज और टीवी पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ये सरकारी नियमों के आधार पर आपको नहीं मिल सकता। तो मेरा स्वभाव थोड़ा संघर्षशील था। मैंने कहा ये जो 12 हाईकोर्ट जज रह रहे, इनके पास टीवी और रेफ्रिजरेटर सरकारी बजट से मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वो निर्णय करके ले लिया है, पर तुम्हारे लिए ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। तो उन्होंने छोड़ दो, मेरे लिए मत करो। तो मैं एक दुकान में गया था और मैंने उनको कहा कि मुझे टीवी खरीदना है, मुझे इंस्टॉलमेंट पे टीवी दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि टीवी का देखा, मैंने मॉडल सिलेक्ट किया, और जब उनको पता चला कि मैं मंत्री हूं तो उन्होंने कहा कि नया पीस आने के बाद सर मैं आपके पास देता हूं, क्योंकि अभी नया पीस अच्छा फ्रेश पीस आएगा, तो आप थोड़ा वेट करिए। बाद में उसका नया पीस आया नहीं और टीवी मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेने वाला मिनिस्टर है, तो शायद पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि इसका मुझे अनुभव आया था। एक बार कामत साहब मेरे साथ फ्लाइट में थे, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी थे। तो मेरे पास आए और उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने उनको कहा, कामत साहब आप मेरी तारीफ कर रहे हो, आपके बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड रिफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। तो बोला हमारी पॉलिसी ऐसी है कि लॉयर और पॉलिटिशियन को हम लोग क्रेडिट कार्ड नहीं देते। तो वो बाद में उन्होंने मेरे लिए तुरंत किया। पर इस बात से एक अनुभव मिला कि जब टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है, एम्बेसडर कार मिल सकती है। मैंने थाने भिवंडी बाईपास पहला बीओटी रोड बनाया, जो बीओटी भारत सरकार ने अप्रूव किया, हम पॉलिसी लेकर गए और बाद में बीओटी पॉपुलर हुआ। और आज मुझे बताने के लिए एक ही बात है, बाकी भाषण करने की जरूरत नहीं है, कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद उसका टोल कम हो रहा था और कर्जा ज्यादा था। तो प्रॉब्लम आया कि उस समय करंदीकर करके एमएसआरडीसी के एमडी थे। उस समय एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो एमएसआरडीसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। तो करंदीकर साहब को शरद पवार साहब ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि ये इसका अड़चन की समस्या आप नितिन को ही पूछो कि वो कुछ बता पाएगा। तो करंदीकर साहब जो थे एमआईडीसी के भी सीईओ थे, बाद में एमएसआरडीसी के एमडी थे, मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये वायबिलिटी नहीं आ रही है और हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि एक्सप्रेस हाईवे का पैसा कैसे वसूल होगा। तो शरद पवार साहब ने कहा है कि आपको मिलकर सॉल्यूशन निकलेगा, नितिन को मिलो। तो मेरे अपरेंट रिएक्शन हुई कि अब मैं तो मंत्री नहीं हूं, मैं क्यों सॉल्यूशन दूं, अब ये आप ढूंढते बैठो। तो करंदीकर जी ने मुझे कहा कि आप अपोजिशन लीडर जरूर हो, पर ये ब्रेन चाइल्ड आपका ही है और आपको ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन सोचकर उनके साथ बैठा और मैंने कहा ऐसा करो, जो पुराना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, नेशनल हाईवे, आप भारत सरकार को मांग लो और एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे को मर्ज कर दो, दोनों को एक ही प्रोजेक्ट बना दो
और ये बनाकर आप प्रपोजल लेके दिल्ली आओ, खंडूरी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो दोनों प्रोजेक्ट मर्ज करने से उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी हो गई और भारत सरकार में खंडूरी जी को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो अनुमति दी थी और पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने उसको मोनिटाइज किया, उनको 3,000 करोड़ रुपए मिले। बाद में वो पीरियड खत्म हो गया, जबकि कॉस्ट जो थी कंस्ट्रक्शन की, मैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए यही उदाहरण बताना चाहूँगा कि रिलायंस ने कोट किया था 3600 करोड़, हमने उसको रिजेक्ट करके MSRDC के द्वारा पूरा किया 1600 करोड़ में, 2000 करोड़ बचा है। उसको मोनेटाइज किया महाराष्ट्र सरकार ने, उस समय मिले 3000 करोड़ और अभी एक साल पहले अभी मोनेटाइज किया ये दोनों हाईवे को, तो महाराष्ट्र सरकार को मिले 8000 करोड़। तो आप ही समझ लेना कि 1600 करोड़ के रोड को एक बार 3000 करोड़ में मोनेटाइज हुआ और अब 8000 करोड़ में मोनेटाइज हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में सोचना ही बंद कर दो। जहां ट्रैफिक डेंसिटी, कल मैं पार्लियामेंट क्वेश्चन के लिए ब्रीफिंग कर रहा था और हमारे रिंग रोड के लिए, अभी बेंगलोर का रिंग रोड बनाने के लिए 22,000 करोड़ लगते हैं, हैदराबाद के रिंग रोड के लिए 17,000 करोड़ लगते हैं। तो हमने हमारे यहाँ नियम बनाया कि 50% लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट राज्य सरकार दे। तो राज्य सरकार को देने में इतना, उनका बजट ही 3-4 हज़ार करोड़ का होता तो पैसा मुश्किल जाता है। तो मैंने पूछते पूछते पूछा कि ये गुलमर्गा करके जगह थी कर्नाटक की, ये रिंग रोड में ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है? तो उन्होंने कहा इतना कंजस्टेड है कि 40,000 PCUs है। तो तुरंत उनके सौभाग्य से थोड़ा मंत्री समझने वाला है, जनरली मंत्री ऐसा होता है कि सरकार तो सेक्रेटरी और बाकी लोग चलाते, मंत्री ज़्यादा बोलते ही नहीं। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि जब 40,000 PCUs है तो इसका इंटरनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पकड़ के इसका IRR 40,000 PCUs पे कितना आता है? तो मैंने कहा आप 10,000 में रोड, 10 साल का रोड बनाकर उसको मोनेटाइज करके 1,000-1,500 करोड़ जेब में रखकर फायदा कमाकर आप बैंक से मोनेटाइज कर सकते हो, फिर राज्य सरकार को 50% क्यों मांग रहे हो? तो वो उन्होंने मेरे आर्गुमेंट के ऊपर उनके पास जवाब नहीं, तो फिर मैंने सेक्रेटरी साहब को तुरंत फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि ये नीति में थोड़ा सुधार करें कि जहां PCUs 20,000 के ऊपर होगा वहां 50% आग्रह करने के बजाय द प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली वायबल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गुड, व्हाई वी आर आस्किंग फॉर गिविंग 50% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही था। तो हिंदुस्तान में 2 चीज़ों के बारे में आप विश्वास रखिए, जो ग्रोथ के बारे में आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी ऑटोमोबाइल ग्रोथ, ये बढ़ रही है और इसलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ी सी अड़चन आई थी 2014 के पहले कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुए, 20% लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट अवार्ड हो गए, वो प्रोजेक्ट अटक गए और उस समय बैंकों को बहुत तकलीफ हुई। और वो तकलीफ होने के बाद जब मैं मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे। उस समय 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए और करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे जिसको हमने बैंकों से NPA से बचाया और वो प्रोजेक्ट फिर से चलने लगे, हमने उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए, रिजॉल्व किए और आज वो स्थिति वैसी नहीं है। पर खारा साहब, वो जो इंप्रेशन उस समय जो तकलीफ बैंकों को हुई है वो सही में हुई है और दैट इज बिकॉज ऑफ वी पीपल, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। पर वो इंप्रेशन अब दूर हो रहा है, पर वो धीरे धीरे दूर होते होते समय चला जाने के कारण बैंकों के और इन्वेस्टर के मन में वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हमको 5-7 साल जो काम हुआ है, अब इसमें अब कोई अड़चन नहीं। पहला निर्णय हुआ है कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करते। दूसरा, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस किए बिना हम करते नहीं, रेलवे के क्लियरेंस कर लेते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर की और वो कमेटी में अभी सब जगह सब मंत्री उसके मेंबर हैं और मैं अभी तो कमेटी का भी क्रेडिबिलिटी अच्छी तैयार हुई कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट रेफर होने के बाद ही तुरंत सब मिनिस्ट्री दौड़ धूप करके क्लियर करके मीटिंग में लेके आते कि ये क्लियर हो गया।
तो बहुत से 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्टॉल प्रोजेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर है। और निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है। इवन वर्ली बांद्रा का अभी आशीष सिंह जी बता रहे थे कि मैंने जब अवार्ड किया था ये प्रोजेक्ट तो 420 करोड़ का था। फिर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लियरेंस, एक्टिविज्म, सबकी कीमत, मैं बहुत बार कोर्ट के, मेरे कभी हाई कोर्ट जज भी मित्र है, सुप्रीम कोर्ट, उनको कहता हूँ कि आपके कारण कितना चूना लगता है, तो 420 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ 1850 करोड़ का। पर 1850 करोड़ उसका एस्केलेशन होने के बाद में भी आज आशीष सिंह जी बता रहे थे कि 900 करोड़ टोल मिल रहा है, तो उसके भी पैसे वसूल हो गए, फ्लाईओवर के भी पैसे वसूल हो गए, और ऊपर से उसमें से अब उस इक्विटी का उपयोग बाकी प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर के मन में, वो आप 110% रखिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूं कि मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और मथुरा में जो स्लज था, सीवेज वाटर, गंदा पानी, उसके ऊपर मैंने हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें 40% सरकार ने दिए और 60% इन्वेस्टर ने लाए। तो वहाँ इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वो सरकार से पानी लेते थे। तो मैंने उनको कहा कि 80 mld स्लज जो है इसको शुद्ध करके रिसाइकलिंग हुआ पानी में आपको देता हूँ, आप कितने पैसे देंगे? तो इंडियन ऑयल ने कहा 20 करोड़ रुपए देंगे साल के। तो हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, और अभी वो चल रहा है, और स्लज से पानी निकलकर रिफाइनरी यूज कर रही है इंडियन ऑयल की, और 20 करोड़ रुपए साल का वो दे रहे हैं। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 40% सरकार के और 60% इन्वेस्टर के और बैंक ने सपोर्ट किया, और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो रोड तो सक्सेसफुल हुआ, एयरपोर्ट साहब बैठे हैं, अभी एयरपोर्ट में भी मॉनिटाइज करके काफी बड़े प्रमाण पर इतना 22% ग्रोथ है। और इसलिए रोड सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी जगह पर इकोनॉमिक वायबिलिटी है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इन्वेस्टमेंट करने में कोई अड़चन नहीं है। और इसलिए आप लोगों के जितना इन्वेस्टमेंट आएगी उसका ही फायदा होगा। अभी जैसे इसका केवल इन्वेस्टमेंट फायदा जो दूसरा है, अब मुंबई और पुणे में इतना ट्रैफिक जाम है, हम लोग मुंबई दिल्ली हाईवे को सूरत से एक नया रोड बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, सबके लिए वहां से पूरे साउथ में जाएंगे। तो उत्तर का पूरा ट्रैफिक जो नॉर्थ से आ रहा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वो पूरा ट्रैफिक जो मुंबई पुणे आके साउथ में जा रहा था, वो सूरत से बदल जाएगा। तो यहाँ का ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हम ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ की टनल्स बना रहे हैं, और हमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी हमारे सेक्रेटरी साहब को कह रहा था, ये टारगेट शब्द NHAI की डिक्शनरी से निकाल दूंगा। आप में जितनी ताकत होगी उतना काम आप करोगे, आपको पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं। इतना हमारा टोल का इनकम है और आगे और बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए TOT का जो मॉडल बना था पहला, वो 5000 करोड़ का था, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ही आए। तो मैंने आग्रह से कहा कि ये मॉडल छोटा करो। अब 500 करोड़ के ऊपर के 500,000 करोड़ के मॉडल हुए, तो इंडियन इन्वेस्टर आए। मैं बैंकर्स है हमारे खारा साहब को इन्वेस्ट करूंगा कि एस्क्रो अकाउंट ले लो इनविट में, और उसका आपके बैंक में अकाउंट खोल के डेली पैसे जमा कर लो। इससे ज्यादा सॉलिड बिजनेस कौन सा हो सकता है? और इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इनविट में। और अभी मैं पीछे पड़ा हूं, ये बात जरूर है कि ये कैनेडियन अभी इंश्योरेंस इकोनॉमी, शेयर इकोनॉमी, और इसके विशेष रूप से जो पैसा इसमें काफ़ी है, और हम लोग अभी इसको और इंडिया में बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अभी मैं हमारे अधिकारियों के पीछे लगा हूँ, और वो भी कोशिश करें कि हम सेबी की परमिशन भी लेंगे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, मैंने हम बैंक का नुकसान नहीं करना चाहते, पर बैंक इंटरेस्ट जितना दे रहे हैं डिपॉजिट पर, उससे हम 2 से 3% ज़्यादा देंगे, और हर महीने में ब्याज देंगे। तो बेचारे जो सरकारी, मैं तो बिजनेस वाला हूँ, पर जो आप सरकार में काम करते हो रिटायर्ड होने के बाद,
आपकी पूंजी डिपॉजिट करते बैंक इंटरेस्ट पर, तो वो इंटरेस्ट सब कम होते जा रहा है। तो बेचारे लोगों की सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अड़चन है। तो मैं कहता हूँ उनको बैंक से 2% 3% ज़्यादा मिला और मंथली इंटरेस्ट मिल गया, तो ये पूरे छोटे छोटे लोग हमारे एक एक इन्विट मॉडल में एक एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और उनको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इस बार इन्वेस्टर का जो व्याप्ति और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे, और इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही इकोनॉमी, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इनको भी हम तो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप होगा। एक और अच्छी बात हुई है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी जैसे चाइना में ये 8 से 10% है, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री यूरोप में ये 12-13% है, और इंडिया में ये 14 से 16% है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि काफ़ी हमारे अच्छे रोड नहीं है, रेलवे में दिक्कतें हैं। तो अब इस समय जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते फ्यूल में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ नए रोड बना रहे हैं। अभी मुंबई से दिल्ली हम कार से आते हैं, अभी 48 आवर लगते हैं। अभी निश्चित रूप से 1 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली कार से 12 घंटे में होगा। तो 12 घंटे में होगा तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। वैसे ट्रक का जो 1 महीने में 4 ट्रिप मार रहा था, वो 8 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और 40 टन का ट्रक होगा, और उसमें भी डीजल के बजाय अगर उसमें LNG आया, CNG आया, अब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी। और एक बात जो है, जो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, कि आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर वाटरवेज बना दिया, और 4 मल्टी मॉडल हब बने, गाजीपुर, हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। और रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी मेरे क्षेत्र में है, इसलिए मैं वहाँ की आपको बता रहा हूँ कि अगरबत्ती की जो काड़ियाँ होती है वो पूरी पहले हांगकांग, वियतनाम और चाइना से इंपोर्ट हो रही थी। मैं बहुत पीछे पड़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा, हमने पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया। अब वो स्टिक्स बनती है, नॉर्थ ईस्ट में ही बाम्बू है। तो मैंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को, तो कुछ धंधा मत करो, एक ही करो कि बस अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाओ। और अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाकर हमने जो जोगी जोपा में जो बना है, उसमें 4,000 टन के इसमें अगरबत्ती की काड़ियाँ पैक करके वहाँ से वाराणसी आएगी। और नागपुर में मैंने अगरबत्ती वालों के साथ मीटिंग कराकर उनको कहा कि वाराणसी से वाया जबलपुर नागपुर में शॉर्टकट है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी और अगरबत्ती आप यहाँ बना पाओगे। ऐसा वो बंगलोर में भी एक काड़िया जाएगी। तो आज अगरतला में, त्रिपुरा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्टिक्स बनाने का काम बड़ा ऑलरेडी शुरू किया। मैं MSME का मंत्री था, काफ़ी आसाम में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई। वो केवल अगरबत्ती की काड़िया बना से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ठीक से बचाने से और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए ये आज बहुत अच्छी बात है कि आज विशेष रूप से, पहला तो NHI के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोड का अनुभव आप सबको आता ही है और इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। रिगार्डिंग लॉजिस्टिक पार्क की हमने नई शुरुआत की है और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और आज मैं हमारे यहाँ जब शिपिंग मंत्री था तो वर्धा में, सिंधी और जालना में हमने बनाया था, जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है। और बाद में फिर हमने अभी इसको, इस कंपनी को शिपिंग मिनिस्ट्री से बात करके JNPT से वो ट्रांसफ़र किया है। तो अब वो महाराष्ट्र में भी 5-7 जगह है, सांगली है, सोलापुर है, नासिक है, और सरकार की जगह पड़ी है। और सरकार की जगह जब पड़ती है तो वहाँ अतिक्रमणों के झोपड़पट्टी बनती है और हम ही लोग फिर उसको रेगुलराइज करते हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं
आप लीगली सही कहते हो कि ये सरकारी जगह है, पर हम चुनाव लड़के नहीं जीतेंगे तो हम थोड़ी भाषण देने के लिए यहाँ पाएंगे, तो हम फिर उसको रेगुलराइज करते हैं। तो ये जो सरकारी जगह है, जगह स्टेट गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए तैयार है, दोनों विन विन सिचुएशन है। और आपने बहुत अच्छा किया कि MIDC ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया और ये काम काफ़ी आगे गया। बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर इसी प्रकार के काफ़ी जगह, अभी मध्य प्रदेश में मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था, उस दिन शिवराज जी के साथ इंदौर में कार्यक्रम में था, तो रतलाम में 1,500 एकड़ जगह पड़ी है मैं हमारे बाजू में, तो उन्होंने कहा हमारी जगह ले लो। तो हम लॉजिस्टिक पार्क्स अनेक जगह पर सरकारी जगह पड़ी है इसी, तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और उनकी कॉस्ट में वो इक्विटी में आएंगे, तो उनको भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी और उससे वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी तैयार हो सकते हैं। हमने रोड बनाने के पहले कॉस्ट ऑफ लैंड और रोड बनाने के बाद बहुत फर्क पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हम जो ये लॉजिस्टिक कंपनी है, ये भी बहुत इकोनॉमिकली वायबल और अच्छे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का धंधा है। और इसलिए इसमें भी कोई इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करके, जिसमें लैंड उसकी होगी तो इन्वेस्टर की भी साथ मुझे लगता है कि और बनाएंगे, ताकि जैसे BOT में, PPP मोड में, हाइब्रिड एन्युटी में जब लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो लॉजिस्टिक पार्क में भी आएगी। और इसलिए इससे देश की इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, वी नीड टू रिड्यूस अवर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और मैं तो एग्रीकल्चर का हूँ और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ये अभी बहुत अच्छी है और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में अपॉर्चुनिटी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज हुई है स्क्रैपिंग पॉलिसी की, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का है और अभी मैं 2004 से जो बात करता था, पहले लोग मुझे हंसते थे, अब मैं जो बात करता हूँ वो सब कहने लगे, इसकी मुझे खुशी है। अब मैंने लोगों को यह कहा कि आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहेंगे तो लोग स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी मैंने ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी ली है टोयोटा की, और जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसको ग्रीन हाइड्रोजन भर के मैंने कहा मैं इसको दिल्ली में घूमूंगा। अभी मैं इलेक्ट्रिक SUV में घूमता हूँ नागपुर में, तो मैं प्रचार करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको इथेनॉल इसका यूज़ करो। आशीष सिंह जी, एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना आप करिए। मैं राजू बजाज से मेरी बात हुई, पुणे में प्रधानमंत्री जी ने 3 पंप इथेनॉल पर ओपन किए हैं और ऑटो रिक्शा जो है वो इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर बजाज की तैयार है। आप पुणे में आपके मिनिस्ट्री में इसके लिए विशेष योजना, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगा और पूरा इथेनॉल तो किसानों का है। तो पहली बात तो ये इथेनॉल का ऑटो रिक्शा पुणे में लॉन्च करिए, और अभी हम लोग एडवाइजरी निकाल रहे हैं फ्लेक्स इंजन की। और फ्लेक्स इंजन का मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और इसके 2 व्हीलर बजाज और TVS ने ऑलरेडी बनाए, ऑटो रिक्शा भी बन गई। अब टोयोटा, बाद में सुजुकी और हुंडई, जिनका 65 to 70% मार्केट शेयर है, तीनों ने हमको एश्योर किया कि हम अब फ्लेक्स इंजन लाने के लिए तैयार है। अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील में है। कल ही मेरे पास ब्राज़ील के एम्बेसडर आए थे। तो अब हम लोग कोशिश करें कि फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी आने के बाद हमारे पेट्रोल गाड़ियों की जरूरत ही नहीं। एक तरफ हम जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि नॉर्वे ने किया है, हम लोगों को अगर अल्टरनेटिव देंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव है, पेट्रोल 120 रुपये लीटर, इथेनॉल 62 रुपये लीटर। और अभी एक टेक्नोलॉजी का लाया, मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ उसका प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू दोनों एक होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो फिर वो 50% बचा तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, पोल्यूशन भी कम है, ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल की अब 350 फैक्ट्री इथेनॉल फ्रॉम राइस, सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। शुगर के बजाय शुगर कैन जूस, मोलाइसेस, BAV मोलाइसेस से इथेनॉल बड़े प्रमाण पे बन रहा है। तो हम क्यों 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट करके पूरा पोल्यूशन करके, दिल्ली, मुंबई सब जगह प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं हम इसको यूज करें। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के बारे में भी हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल विश्वास है कि 2-3 साल के अंदर हमारी पेट्रोल के बजाय हमारी व्हीकल इथेनॉल पर कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर इलेक्ट्रिक जो बैटरी केमिस्ट्री है इसमें अच्छा काम हुआ है। अब 85% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है और इसके बाद और अच्छा रिसर्च चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री में लगातार हम उसके पीछे लगे कि सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, वो भी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है और लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इसकी पेट्रोलियम कार के बराबर कीमत होगी। तो आज इलेक्ट्रिक के पेट्रोल कार को जाने के लिए 10 रुपए किलोमीटर लगता है, डीजल को 7 रुपए लगता है और इलेक्ट्रिक को 1 रुपया लगता है। तो धीरे धीरे कहने की जरूरत ही नहीं, लोग ही उसको लेंगे और पोल्यूशन नहीं है, तो ये होना ही है। और अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमारे पुरी साहब के पास मैंने पिछले मंगलवार को उनके घर पर एक मीटिंग थी, सभी ऑयल कंपनी के चेयरमैन, मैं और वो ऐसे होने वाली थी। तो मेरा एक सुझाव उनको था कि जितना वेस्ट वाटर है, मुंबई, पुणे, सभी महानगरों में वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर, जो रिसाइकलिंग करके हम महाराष्ट्र सरकार को, मेरे यहाँ हम लोग बेचते हैं हमारा टॉयलेट का पानी, और 325 करोड़ रुपए रॉयल्टी हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो कचरे को सेग्रीगेट करेंगे और उसके ऊपर में सोलर रूफटॉप लगाएंगे। और एक छोटा सा गुजरात की एक कंपनी ने छोटी विंड मिल निकाली है फाइबर ग्लास की, तो उससे पावर तैयार होगी और पावर कॉस्ट अगर सस्ती होगी तो 50 रुपए किलो ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा, तो एकदम इतना फायदा हो जाएगा कि हम स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में कोल के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हमको बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन बनाया और ये जो हाइड्रोजन मिशन है इसके लिए हर नगर पालिका, महानगर पालिका अगर गंदे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक कचरे को अलग निकाल के भी हाइड्रोजन बना सकती है। और कल ही मेरे पास एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, शेखावत जी हमारे मंत्री उनको लेकर आए थे, ब्राजील और अमेरिका के करीब 10-12 लोग थे। मैं अभी बेंगलुरु 10 तारीख को जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइजर यही हमारी कंपनी बना रही, भारतीय कंपनी, और इलेक्ट्रोलाइजर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है। हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइजर तैयार करने वाली 10 कंपनियां आ गई। जो सेमी कंडक्टर्स उन्होंने मुझे दिखाए, सब बनाने वाले हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं और हमारे यहाँ बेंगलोर से वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। तो हमारे यहाँ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, ये सब आने वाले इसमें ऑप्शंस अगर लोगों को दिए तो और कॉस्ट कम होगी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा स्क्रैपिंग का होगा। जो 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की बनेगी और हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का हब बनेगा। ऑलरेडी ऑल वर्ल्ड के सभी प्रेस्टिजियस ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है और ये जो स्क्रैपिंग से जो नए व्हीकल जो बनते हैं उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 35% कम होगी। और ये जो स्क्रैपिंग में तो लिथियम आयन भी निकलता है और 95% उसका मटेरियल यूज होता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी 35% कॉस्ट अगर कम होगी तो टाटा और महिंद्रा कोई सामाजिक कार्य करने के लिए थोड़ी डाल रहे यूनिट। ये इकोनॉमिक वायबिलिटी उनको समझ में आई, इसलिए वो 5 यूनिट 10 यूनिट डाल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फिटनेस सेंटर, स्क्रैपिंग यूनिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक बनाकर आप जैसे बाकी राज्य सरकार में पॉलिसी बनाई, आप भी बनाइए और ये बड़े प्रमाण पर अगर हो तो रोजगार भी निर्माण होगा और इससे देश की ऑटोमोबाइल इकोनॉमी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अभी हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अगर एक जो 15 साल पुराना ट्रक जो है वो आज के जो 15 नए ट्रक जितना पोल्यूशन करते हैं उतना पुराना है और सरकार को भी, राज्य सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा करीब 16%। 1 करोड़ व्हीकल अगर स्क्रैपिंग होंगे तो ये 1 करोड़ में से 90 लाख लोग तो नए व्हीकल खरीदी करेंगे। तो जीएसटी किसको मिलेगा? राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी मिलेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि ये भी विन विन सिचुएशन है। हम वी नीड कोऑपरेशन, इनिशिएटिव तो हमने लिया है पर इसमें भी बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की सोच एकदम क्लियर है कि सरकार से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को ज़्यादा इनकरेज करो। और डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले कमेटी का मैं ही हूँ प्रमुख, अनेक बार अनेक विषय एक के पीछे एक आती है
तो वो कहते, मैं एक आधे बार कहता हूँ कि ये प्रॉफिट में चल रहा है प्रधानमंत्री जी, अब इसको मत, मैंने बोली मोह में मत पड़ना, ये सरकार का काम नहीं है, ये धीरे धीरे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दे दो, हमारा काम नहीं है। और ये बिल्कुल सही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी, तो हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट द बेस्ट पर्सन टू रन द बिजनेस, यू आर द बेस्ट पीपल। तो धीरे धीरे आपको ही इसको दे और हम फैसिलिटेटर बने। तो इसलिए ये तीनों जगह पर जो इन्वेस्टमेंट आकर आप सब लोगों का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस, और उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत विन विन सिचुएशन है। और इसलिए आज आपने ये तीनों जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल थे, इस पर काफ़ी अच्छा ये हुआ। बैंकिंग और इन्वेस्टर जो है उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि आज एक ही समय 4 ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गए, तो नेचुरली थोड़ा जस्टिस नहीं मिला है। पर मैं जो फीकी है, सीआई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनको अनुरोध करूंगा कि आपके रीजन में, स्टेट में एक एक सब्जेक्ट के अलग इन्वेस्टर्स को बुलाकर इसके और डिटेल में जाइए। और जैसे मनोज कुमार जी ने कहा है कि हम लोग बड़े ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है। कोई कॉन्ट्रैक्टर को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके कोई भी सजेशंस है तो हम लोग उसको पॉजिटिव अप्रोच में सोचने के लिए तैयार है। तो आप इसके ऊपर निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आइए, राज्य सरकार इसके लिए नीति बनाए और आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बात हमारी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम करने की बात कर रहे हैं और विशेष रूप से नए रोजगार निर्माण करने की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो निश्चित रूप से इसमें संभव होगा। और इसमें आप सब लोग जरूर सहयोग करिए, यही आपसे अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए मंत्री महोदय। A big round of applause once again for the Honorable Union Minister Nitin Gadkari जी। और अब वो समय आ गया है जहां पर टेस्ट मैच में लंच के पहले का आखिरी ओवर कौन डालेगा, इस पर चर्चा होती है। तो आई वुड लाइक टू नाउ रिक्वेस्ट रीजनल ऑफिसर NHAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंशुमनी श्रीवास्तव जी टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स। Honorable Minister Road Transport and Highways Government of India, Honorable Minister Industries Government of Maharashtra, respected Secretary Road Transport and Highways, respected Chairperson NHAI, Additional Chief Secretaries Government of Maharashtra, Additional Chief Secretary Industries Government of Maharashtra, Chairman SBI, other distinguished speakers from NVIT, NHAI, का एक बड़ा ही महत्व है। ये महज एक दिखने के लिहाज से विहंगम दृश्य नहीं, बल्कि उसकी एक पौराणिक और धार्मिक मान्यता भी बहुत बड़ी है। और निश्चित तौर से देवों के आह्वान के साथ साथ मां गंगा को पूजने की, प्रकृति को पूजने की जो एक परंपरा रही है, उसके लिहाज